Hi students, in my yesterday's lecture we were discussing section 9 of CPC. We had started the journey of jurisdiction. We had discussed the various aspects of jurisdiction. We went on to discuss section 1, the territorial jurisdiction. We then went on to discuss the pecuniary jurisdiction, section 6. And then we came to section 9 yesterday. Section 9, when we dissected the first part, the section 9 can be divided into two parts. The first part was the court shall. Now that was the most, we dwelt on the word shall. Have jurisdiction to try all suits. Shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature. ये base word था. We discussed all the aspects of what is the connotation of the word shall, what is the connotation of the word all, and the word civil. We divided into two parts. That civil proceeding is different from civil nature. Civil nature has a wider connotation. We even saw Marthoma Supreme Court judgment on this. And anything which is civil in nature, we saw what are civil rights. These are private individual rights which can be contrasted from the rights which are given by criminal law. We saw all those aspects in my previous lecture. We then went on in my previous lecture to see that jurisdiction is something which is conferred by the legislature. Jurisdiction cannot be waived off by consent. It cannot be acquired by consent. And that is why jurisdiction is something which is a much more serious affair, because it is not only involves the legislature takes its decision regarding jurisdiction based on international law principles. We also saw that jurisdiction is something which is inherent in a court. If there is no jurisdiction, then that court is not competent to take up the matter. अगर आप एक ऐसे कोर्ट में जा रहे हो जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो नेचुरली जो उसका डिसीजन है वो वॉइड डिसीजन है. एंड इन दिस कंटेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग डिक्रीज वॉइड एंड इलीगल डिक्री, एंड देन जुरिसडिक्शंस इन व्हिच द होल प्रोसीडिंग शैल बी कंसीडर्ड वॉइड, या फिर वो जुरिसडिक्शंस जो कायदे से इर्रेगुलर होंगे, वो सब हमने पिछली बार देखे. नाउ वी वर ऑन दिस टॉपिक ऑफ Section 9, the subject matter jurisdiction. The court is empowered. Section 9 is giving a power to the courts, to all civil courts, to try all, the word all matters of civil nature. Now, in this context, we saw explanation 1. Explanation 1 was very important yesterday, because it said that a suit in which the right to property or a right to office is being contested. So wherever a suit which pertains to a right of property and it is being contested, or a right to any office which is being contested, then these are suits of a civil nature. Notwithstanding that any such right may depend on religious rites or ceremonies. In other words, implication क्या निकला था कि religious rites and ceremonies are beyond the purview of CPC. But notwithstanding this fact that religious rites and ceremonies are beyond the purview of CPC, अगर मेरा ये राइट टू ऑफिस या राइट टू प्रॉपर्टी जो मैं अब सिविल सूट में लेके आया हूं, अगर वो डिपेंड कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज, तो फिर हम मेरे वो वाले राइट डिटर्मिन करने के लिए, वो वाले मेरे सिविल राइट्स जो मैं कंटेस्ट कर रहा हूं राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस के, उनको डिटर्मिन करने के लिए मुझे मेरे रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज
को अब इसको कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि ये रिलीजियस सेरेमनीज या ये जो रिचुअल्स हैं ये अलाउड हैं कि नहीं है. वी हैड डिस्कस्ड दिस यस्टरडे. जस्ट अ रिकैप. अब मैं चाहूंगा कि आप फटाफट इसको लिख लें, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स. So I'm going to say explanation 1. Explanation 1 clarifies that when a suit is based only on the question of caste or on a question of religious rites or ceremonies, then there is no personal को capital letters में लिखना, then there is no personal right involved. Hence, it is not a suit of a civil nature. It is a purely social question. It involves only rights of a community or intrinsic rights in a religion. It does not deal with personal individual rights. However, 1A, when caste question, the question on caste or a question pertaining to religious rights is not the principal question. Again, not the principal question underlined. Hence, when a question of caste or a question pertaining to religious rights is not the principal question, but a subsidiary question. That means the personal right of a person is the main question. But to determine that person question, I have to first determine the religious rites and ceremonies. A, first part. B, where the principal question is of a civil nature, which means right to property, right to office. B, so where the principal question is that of property or office. C, where the principal question is of a civil nature, but it cannot be determined without deciding the question on caste or question relating to religious rights. In these cases A, B, and C, the court has the power to decide the social issue of a caste or religious rights so as to enable it to determine the question of a civil right of the party. In simple words, मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूं. अगर मेरा क्वेश्चन प्योरली राइट ऑफ प्रॉपर्टी पे है, राइट ऑफ ऑफिस पे है, अगर मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपली कास्ट या रिलीजन का नहीं है पर उससे जुड़े हुए राइट्स का है, और या फिर मेरे राइट्स डिटरमिन करने के लिए आपको वो कास्ट या रिलीजन का मैटर डिसाइड करना पड़ेगा, तब
then the court is allowed to dabble with religious rites, religious ceremonies, or intrinsic caste matters. ये चीज क्लियर की गई जो मैंने अभी पढ़ा है, ये आया था प्रिवी काउंसिल में. दिस थिंग वॉज क्लैरिफाइड बाय द प्रिवी काउंसिल. थिरु THIRU, थिरु इज मिस्टर वहां पे, थिरु रामानुजा RAMANUJA वर्सेस वेंकटचार्लू VENKATACHARLU 1947 प्रिवी काउंसिल. प्लीज राइट डाउन आगे. ये सारा जो मैं डिक्टेशन दे रहा हूं ये एग्जाम्स में आएगा, इसलिए मैं डिक्टेशन दे रहा हूं इसमें, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए लिखते वक्त. इंट्रिंसिक मैटर्स, intrinsic inverted commas, intrinsic matters of religion or caste are not matters of a civil suit. Hence, the character of rites, the character of ceremonies, the character of a caste is not a matter of a suit, but religious offices may involve religion provided there are private civil consequences. So, religious offices may involve religion per se, provided there are private civil consequences. Hence, an infringement of a right claimed as a member of the religious order is a civil wrong. एग्जाम्पल लेते हैं. जहां पे हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, religion per se is not a matter of civil suits. बट जहां मेरा रिलीजन से जुड़ा हुआ राइट आ गया और वो पर्सनल सिविल राइट निकल आया, इसका एक एग्जांपल लेते हैं प्रिवी काउंसिल से. हुकुम चंद वर्सेस महाराज बहादुर, हुकुम चंद वर्सेस महाराज बहादुर 1933 प्रिवी काउंसिल. In this case, the question was that where the matters, it was the matters concerning Jains. जहां तक एक जैन का सेक्ट का इंटरनल इंट्रिंसिक मामला था, वो सिविल सूट नहीं था. बट अगर किसी का राइट टू वर्शिप उससे कनेक्टेड है तो वो सिविल मैटर बन जाता है. This was Hukumchand versus Maharaj Bahadur 1933 Privy Council. It was held that a intrinsic matter of a sect, SECT, sect of Jains did not amount to a civil suit. But if from that my right to worship was affected, that part becomes a civil suit. Similarly, my right to do some puja, my right to have a customary bull race, साउथ इंडिया में होते हैं. इनफैक्ट अभी एक को सुप्रीम कोर्ट ने बार किया था, बहुत एक एनिमल्स के साथ बहुत क्रूअल्टी थी, पर उनका कस्टमरी है. तो जहां मेरा एक तो चीज होता है, प्लीज रिमेंबर, रिलीजन का इंट्रिंसिक पार्ट. रिलीजन के बहुत सारे इंट्रिंसिक पार्ट्स होते हैं हमारे. जो इंट्रिंसिक पार्ट्स हैं, जो इंट्रिंसिक पार्ट क्या होते हैं, कोई रिलीजन का बेस, उसका बेस डॉगमा, उसकी फिलॉसफी,
उसके रिचुअल्स, उसके राइट्स, वो नहीं, वो सिविल सूट नहीं है। पर अगर मुझे आप मना कर रहे हो कि वो राइट्स नहीं करोगे, आप एक शेड्यूल कास्ट हो, आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप एक लेडी हो, आपको कह रहे हैं नहीं इस मंदिर में आप नहीं जा सकते, ऐसे केसेस में नाउ इट इज अ वायलेशन ऑफ माय सिविल राइट। अभी हमने देखा दो तीन जगह ऐसी आई जहां राइट टू वर्शिप वाज नॉट अलाउड टू विमेन। साउथ इंडिया में भी हमने देखा, बॉम्बे में, मुंबई में भी हमने देखा, हाजी अली दरगाह वगैरह, आई विल नॉट नेम। तो उन सब जगह में क्या हुआ? डिसीजंस वर पास्ड इन देयर फेवर, बिकॉज वो उनके पर्सनल राइट्स के से इन्फ्रिंज कर रहे थे। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, a suit for declaration that the plaintiff is entitled to worship bareheaded is a suit of a civil nature. वो कहता है जी मैं सिर नहीं कवर करना चाहता, मेरी मर्जी, मेरे पे आप जबरदस्ती कर रहे हो, आई वॉन्ट टू, अब एक डिक्लेयर करो आप कि मेरा राइट है कि मैं बेयर हेडेड पूजा कर लूं, सिविल सूट। ये मामला पंजाब में आया था, रतन सिंह वर्सेस बेलेराम, रतन सिंह वर्सेस बेलेराम, BAILEY, बेलेराम, 1952, पंजाब। सिमिलरली जहां पे क्रिश्चियनिटी के सर्टेन रिचुअल्स के बारे में लड़ाई थी, यू नो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई रिचुअल्स के ऊपर ही है। तो जहां लड़ाई ही रिचुअल्स की है, वो क्या है? इट इज एन इंट्रिंसिक मैटर ऑफ रिलीजन, नॉट अ सिविल सूट। बट एक चीज है, प्राइवेट इंडिविजुअल राइट्स का मतलब ये नहीं है इंडिविजुअल ओनली। मैं एक यात्रा, रिलीजियस यात्रा निकालना चाहता हूं, या मेरी रिलीजियस जो मेरी कम्युनिटी है वो एक यात्रा, बहुत सारी यात्राएं निकालते हैं ना, आपने देखा होगा सुबह कई, वो क्या होता है, प्रभात फेरी एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कहते हैं जी हमने निकालना है। अब यहां पे कम्युनिटी आ गई, कम्युनिटी राइट्स भी सिविल राइट्स हो सकते हैं। तो माई राइट टू टेक आउट अ रिलीजियस प्रोसेशन इज अ सिविल राइट, मेरा राइट है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये हक देता है टू पीसेबली असेंबल विदाउट आर्म्स। सो इसीलिए मेरे बहुत सारे राइट्स, प्लीज रिमेंबर, ग्रुप राइट्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मेरे ग्रुप राइट्स कौन से होंगे? जो मेरे पर्सनल सिविल राइट्स, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, सिविल राइट्स है। बट ये कहना कि जो हमारे हमारे रिलीजन के मुताबिक हमारे भगवान को इस कलर के कपड़े होने चाहिए, ये एक सिविल राइट नहीं है, ये एक रिलीजन इंट्रिंसिक राइट है। So please remember, suits relating to rites and rituals in a temple or any other place are not of civil nature per se. But right to profess, right to propagate, right to practice my religion. My religion means me or my community. It is a fundamental right under Article 25. And if I'm not going to allow you, then it is an infringement of my civil right. ये और बात है कि मुझे सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मैं आर्टिकल 32 में रिट डाल सकता हूं, प्रेरोगेटिव रिट डाल सकता हूं। बट देन इट इज अ सिविल राइट।
So basically, personal rights which accrue out of a religion are civil rights. And I am now quoting Marthoma. Ram Dulari Saran versus Yogeshwar, 1969. I am now going to deal with caste. यहां पे अगर आप नोट करो, the word is suit in which right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decisions of questions as to religious rites or ceremonies. क्या इसमें caste भी आता है? There is a catena of judgments which say that caste also can be included. As far as caste is concerned, Ram Dulari Saran versus Yogeshwar, 1969, it was held matters which are intrinsic to a caste. ये caste कि ये ऐसा करेगी, ये caste पहली शादी लड़की की पीपल के पेड़ से करेगी. This is an intrinsic matter. ये कास्ट अपने मुंडन करने सारे वहीं जाएंगे. Intrinsic matter of a caste. So matters which are intrinsic matters of a caste are beyond the purview of a civil suit. But to expel a person from a caste, to deprive him from following any of the aspects of the caste, these are all civil suits. जैसे कि मैंने बोला, I'm going to quote Ram Dulari Saran. Internal matters of a caste are to be decided by whom? By the caste governing bodies. पूरी कास्ट की गवर्निंग बॉडीज होती हैं, आप कुछ भी करो पूरे खड़े हो जाते हैं. So internal matters of a caste are to be determined not by courts but by caste governing bodies, and they are governed by customs and not by courts. Even the status of a caste cannot be decided by a court. लेजिस्लेचर डिसाइड करता है. जो लोग मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको उसके ऊपर जजमेंट्स भी दिए थे. सो आई होप आई एम क्लियर ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि एक सूट ऑफ ए सिविल नेचर क्या है. पहली बात तो कोर्ट की जिम्मेवारी है, कोर्ट को पावर दे रहे हैं कि कोई भी कोर्ट कोई भी सूट ऑफ अ सिविल नेचर ट्राई कर सकता है. शैल. सिविल नेचर क्या है? जहां छीटे हों सिविल के. इट इज मोर देन प्योर ब्लैटेंट खालिस सिविल. सिविल जैसा हमने एग्जाम्पल भी लिया था कल. Purely religious matters, purely matters relating to rites, ceremonies, purely matters of caste are not suits of a civil nature. But if any personal civil right gets attached to them, then it is a right of a civil nature. Because then, to decide that personal right, I have to dabble with, I have to go into religion, I have to go and see the rites. I have to determine the rights to determine the personal civil right of the applicant, the party. I hope everybody is now clear about this aspect. Now we go to explanation 2.
Explanation 2. For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in the explanation 1, or whether or not such office is attached to a particular place. Explanation 2 deals only with office. सिर्फ ऑफिस से डील करता है. कल हमने ऑफिस का कॉनोटेशन देखा था. हमने कल ऑफिस का कॉनोटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्ड्स में देखा था. ऑफिस वो है जहां पे आपकी कोई ड्यूटीज निर्धारित की जाती है, और अगर अपने आप वो ड्यूटीज पूरी नहीं करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. ऑफिस गिव्स यू लीगल ऑब्लिगेशंस, and the non-following of those legal obligations involves the system of penalties and punishments. हम यहां बात कर रहे हैं ऑफिस कोई भी, any right to property or office is a civil right. क्यों? ऑफिस पर्सन से जुड़ा होता है. हर ऑफिस का जोड़ किससे होता है? एक पर्सन से. और जहां पर्सन इन्वॉल्व हो गया, ऑफिस उसको राइट्स देता है. राइट्स भी देता है, लायबिलिटीज भी देता है. तो जहां मैंने अपना एक पीएन रख लिया, उसको मैं सैलरी नहीं दे रहा हूं, उसका पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है. और जहां वो काम नहीं कर रहा है तो मेरा पर्सनल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है. इसीलिए ऑफिस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑफिस हमेशा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से जुड़ जाता है. इस चीज को दिमाग में रखना. यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं? ऑफिस विच इज कंसर्न विद रिलीजन. तो रिलीजियस ऑफिस की अगर हम बात करें, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस इज अटैच्ड टू द ऑफिस. पहला पॉइंट ये लेते हैं. सो एक्सप्लेनेशन 2 को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑफिसेज आर ऑफ 2 टाइप्स. तो रिलीजियस ऑफिस की हम बात कर रहे हैं. रिलीजियस ऑफिसेज आर ऑफ 2 टाइप्स. ए सेकुलर, आई एम सॉरी, ऑफिसेज आर 2 टाइप्स, सेकुलर एंड रिलीजियस. तो ऑफिस इज अ जीनस. ऑफिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेकुलर ऑफिसेज एंड रिलीजियस ऑफिसेज. सेकुलर ऑफिस जो सब जाते हैं, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी, हम 1000 10,000 कितने ऑफिसेज होते हैं जो ऑफिस चल रहे हैं, वो हो गए. रिलीजियस ऑफिस, रिलीजियस ऑफिस की बात कर रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन 2 में. रिलीजियस ऑफिस कैन बी डिवाइडेड इन फर्दर 2 क्लासेस. तो प्लीज रिमेंबर, ऑफिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. तो अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ऑफिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सेकुलर ऑफिस एंड वी हैव रिलीजियस ऑफिस. Religious office can further be divided into 2 parts. अब this can further be divided into 2 parts. पहला, those offices where a person gets fees as a right. जहां पे फीस है, where I get fees as a right. मैं एक मंदिर का पुजारी हूं, मैं एक मॉस्क का काजी हूं, मुझे हर महीने तनख्वाह मिलती है. There I get fees. मैं कोई एक गुरुद्वारे में ग्रंथी हूं, मुझे फिक्स तनख्वाह मिलती है. So first, those offices where a person gets फीस एज अ राइट. अब अगर वो नहीं मिलेगा, अब उसको आपने तनख्वाह ना दी, तो कल को वो आपको कोर्ट में ले जाएगा क्योंकि मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज हो गया है.
दूसरे जो ऑफिस हैं, तो ये तो हो गया फीस, वेयर आई गेट फीस एज अ राइट, मुझे मिलना है। आपने मुझे रखते वक्त बोला था, लिखा था, लिख के रहा है जो भी था, कि आपकी 15,000 रुपये महीना हम देंगे। दूसरा, जहां कोई फीस नहीं होती, जहां ग्रेच्युटी होती है, ग्रेच्युटी बेसिकली क्या होता है? चढ़ावा, ग्रैटिट्यूड। आप जाते हो मंदिर में, जाके कुछ चढ़ाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, कुछ चढ़ाते हो। सो जहां पे चढ़ावा है तो वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो एक तो हो गया जहां आपने पंडित या ग्रंथी या काजी की आपने फिक्स कर दी कि यू विल गेट अ फिक्स्ड फीस, और एक जहां कोई फीस नहीं है बट जहां पे ग्रेच्युटी, चढ़ावा आता है। सो फीस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेच्युटीज। ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे एग्जाम में, और ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। सो फीस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेच्युटी। अभी समझ लो, मैं फटाफट डिक्टेट कर दूंगा इसको, जस्ट पहले समझ लो, आएंगे क्वेश्चन इस पे। सो फीस एक मेरा राइट है, ग्रेच्युटी वॉलंटरी होता है। आप पे डिपेंड करता है। पंडित जी ने आज पूजा बड़ी अच्छी कराई, 1,000 रुपए दे दो यार। दूसरा कहेगा ये पंडित तो पंडित ही नहीं लग रहा था, नहीं नहीं इसको 100 रुपया दे देते हैं, मर्जी है आपकी। सो ग्रेच्युटी इज नॉट फिक्स्ड, इट विल डिपेंड। अब द क्वेश्चन विच केम अप वाज कि अगर कि ये जो ऑफिस है ग्रेच्युटी, सो ऑफिसेस दो टाइप के हैं। रिलीजियस ऑफिसेस कैन बी ऑफिसेस वेयर यू गेट फीस एज a right, and other office where you get no fees as a right but you only get gratuities. Now the question which came up was whether religious offices of the second kind, of the kind which involve gratuities, are they covered by explanation 1 office? क्या एक्सप्लेनेशन 1 में जो ऑफिस वर्ड आ रहा है वो कवर होते हैं? इस पे देयर वाज अ डाइकोटमी ऑफ थॉट। कैलकाटा एंड ओडिशा हाई कोर्ट सेड ये ऑफिसेस जो हैं चाहे ग्रेच्युटी के हैं, दीज आर सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। तो कोई भी ग्रेच्युटी से अगर जुड़े हुए सूट आते हैं तो वो तो सिविल नेचर के हम मानते हैं, इवन चाहे उसमें फी अटैच, फिक्स्ड फी अटैच नहीं है, फी एज अ राइट अटैच नहीं है तब भी। पर मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये सिविल नेचर नहीं है, कोई राइट नहीं इससे जुड़ा हुआ, तो राइट नहीं जुड़ा हो तो हम इसको ऑफिस नहीं कह सकते, तो ये ऑफिस की परिभाषा में ही नहीं आते हैं, सो वी डोंट एक्सेप्ट इट। सो देयर वाज अ डाइकोटमी ऑफ जुडिशियल ओपिनियन ऑन दिस मैटर। एक्सप्लेनेशन 2 has laid to rest this dichotomy of opinion. Explanation 2 has removed this conflict of opinions, and now it says it is immaterial whether the office is connected with fees as a right or office is connected with gratuity, दोनों ऑफिस की परिभाषा में आते हैं। So that is what it says. The new explanation 2, which was added by the 1976 Amendment Act, for the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees is attached to an office as a right, or that office, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, or that office is connected with gratuities. To the office referred to in explanation 1, office referred to in explanation 1 here means religious office, or whether or not office, second part, or whether or not such office is attached to a particular place.
हमारे बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं जो एक जगह नहीं होते। बहुत सारे अब ऑफिसेज हैं, कई ऑफिसेज रिलीजियस ऑफिस एक जगह होते हैं, पर कई रिलीजियस ऑफिसेज बहुत जगह होते हैं। इट इज इमटेरियल के रिलीजियस, अब वो ऑफिस उस रिलीजन का होना चाहिए, अब वो चाहे ए जगह में है या बी जगह में है या सी जगह में है, इट इज इमटेरियल। तो हमने पूरे रास्ते खोल दिए ऑफिस के, यानी कि हमने रिलीजियस ऑफिस की परिभाषा को बहुत वाइडन कर दिया एक्सप्लेनेशन 2 में। एक्सप्लेनेशन 2 में हमने कहा कि ऑफिस सिर्फ वही नहीं है, रिलीजियस ऑफिस सिर्फ वही नहीं है जिसके साथ फीस अटैच्ड हो एज अ राइट, बट इवन वो भी है जहां पे ग्रेचुटी के बेस पे वहां पे चढ़ावा मिलता है, वो भी ऑफिस की परिभाषा में आएगा, इवन दो देर आर नो लीगल ऑब्लिगेशंस, पेनल्टीज और पनिशमेंट्स इन्वॉल्व विद दैट ऑफिस। ए बी, it is also immaterial if that religious office is actually attached to one place or that religious office is now existing at another place. Basic thing is उस religion का office होना चाहिए. Quickly write down a few lines on this. Explanation 2 was inserted by the CPC Amendment Act 1976. The need for this explanation was because of the confusion and contradictory High Court decisions of Calcutta, Odisha, Madras and Allahabad. Offices can be, broadly speaking, classified as secular offices or religious offices. Office can be defined, जो मैंने कल आपको लिखवाया था वो लिखो यहाँ पे. An office can be defined in the terms of the Honorable Supreme Court like this. Next. As far as religious offices are concerned, they may further be divided into two classes. A, where those offices where a person gets fees as a right. For example, Qazi of a mosque, Pandit of a temple, etc. Fees as a right means he gets a salary, a fixed salary or a fixed fees, whatever. Second, religious office can also be divided into, second, those offices where no fees is paid, but the office entitles a person to gratuities. For example, a pujari who gets gratuities in a puja. In brackets, chadhava. Next para. Fees are different from gratuities. A fee can be demanded as a matter of right for the execution of stipulated functions. Non-payment of fees can be infringement of a civil right. It can be a suit of civil nature. Gratuities are entirely voluntary in nature. So in offices where fees is attached, the person acquires a right to office and all rights which may accrue from an office, including the right not to be removed from office. However, in the second type of religious offices, where no fees is attached, but there are only gratuities, no right accrues to the holder of such an office. An Honorable Madras and Allahabad High Courts have held
any infringement of their rights to office would not be of a civil nature. The new explanation 2 has removed the conflict of opinions as it declares A. It is immaterial whether the office is with any attached fees or with gratuity. B. It is immaterial if it is attached to any particular place or not. I hope everybody is clear on these aspects. ये था सेक्शन 9 का पहला पार्ट. वापस चलते हैं बॉडी पे. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature. Full stop. पहला पार्ट खत्म. दूसरा पार्ट शुरू. Accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Second part deals with the negative part of this section. What are the bars to a civil suit? So second part of this section, bars to a civil suit. So when I go to bars of a civil suit, we can divide this topic into two parts. Suits expressly barred by law, suits impliedly barred by law. एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ. So please remember, if a statute creates a special forum for enforcement of a right which expressly excludes a civil court, then it is an express bar. A suit is said to be expressly barred when it is barred by any law for the time being in force. Who will make these bars? The legislature. So it is a competent legislature which may lay down these bars, which will then oust the jurisdiction of a civil court. Let's see some examples. If we go to certain examples, Section 170 of the Representation of People's Act, elections wala. No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or a decision given by any returning officer in connection with an election. No civil court will have any power. तो जो रिटर्निंग ऑफिसर डिसीजन दे रहा है इलेक्शन के मामले में, सिविल कोर्ट में आप नहीं जा सकते. Section 37 of the Industrial Disputes Act. No suit shall lie against any person who in good faith has done any act in pursuance of this act. गुड फेथ में अगर किसी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में सेक्शन 37 कहता है अगर उसने किया है आप उसको सूट में नहीं डाल सकते उसके खिलाफ. सेक्शन 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. It bars jurisdiction of a civil court to entertain any suit or modify any proceedings made under the Income Tax Act. नहीं जा सकते आप. सिमिलरली हम आगे जाके अभी देखने वाले हैं सेक्शन 5, रेवेन्यू कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बाहर है. जहां स्पेशल या लोकल लॉज का प्रोसीजर है उस पे सीपीसी नहीं लगेगा. सेक्शन 4
आने वाले हम उस पे। या फिर मैटर्स डेल्ट बाय स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। यू नो देयर आर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, हर ट्रिब्यूनल पे स्टैट्यूट्स हैं। सो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स अंडर द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स लाइक, जैसे अभी मैंने बोला इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अभी मैंने बात किया, रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, या डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हैं जैसे बार काउंसिल वगैरह। ऑल आर एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम कॉग्निजेंस बाय अ सिविल कोर्ट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। हमने ट्रिब्यूनल की सारी बातें तो हमने आउट कर दी। हमने कह दिया कि जी ट्रिब्यूनल को तो आप एक बार जो ट्रिब्यूनल में मामला चला गया वो आप नहीं ला सकते, हमने कह दिया। ट्रिब्यूनल लॉ फॉलो ना करे तो, या ट्रिब्यूनल जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ना फॉलो करे तो, ट्रायल्स मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ट्रिब्यूनल अपना ही लॉ फॉलो नहीं करता, चलो, या वो नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करता, एक पार्टी को सुन के कहता है चलो चलो हो गया, कहां जाऊं? इसके लिए आई हैव, फर्स्टली लेट्स टेक अप प्रीवी काउंसिल का एक जजमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क, MASK, मास्क एंड कंपनी 1940 प्रीवी काउंसिल। Also I have Supreme Court firm Seth Radhakrishnan versus the Administrator Municipal Committee Ludhiana 1964 Supreme Court. It was held that in these cases where the tribunal is not following its own law, or the tribunal is not following the basic principles of justice, it is not following natural justice, in such cases the civil court's jurisdiction is not completely ousted. तो फिर एक खिड़की खुली है, सिविल कोर्ट के दरवाजों की एक खिड़की खुली है। I read from these judgments, a suit in a civil court will always lie to question the order of a tribunal created by a statute, even if the order has been expressly made final. If, now this is important line, if this said tribunal abuses its power and does not act under the stipulated act and violates its provisions. सेम चीज बोली थी प्रीवी काउंसिल ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस मास्क एंड कंपनी। The civil court can entertain a suit despite its jurisdiction being specifically excluded when, in two conditions: A, where the provisions of the act have not been complied with; B, the statutory tribunal, please statutory is important, statute से बना होना चाहिए, the statutory tribunal has not acted in conformity with justice, equity, good conscience, with the fundamental principles of natural justice. So please remember, the doors of a civil court can be opened
if the tribunal does not follow law or does not follow justice, the principles of justice, it can. इसके ऊपर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा ट्रिब्यूनल पे एक लैंडमार्क जजमेंट है इस पे, धूलाबाई, DHULABHAI, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1969 सुप्रीम कोर्ट। ये ट्रिब्यूनल्स वर्सेस सिविल कोर्ट के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। व्हाट डज इट से? इसमें बेसिकली क्या कहा कि अगर कोई स्टैट्यूट कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल को फाइनल पावर्स देता है तो कोर्ट की पावर्स कंप्लीटली सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद। तो जहां पे एक्सप्रेसली ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है और एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़े, तो सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद है। सेकंड, जहां कोई एक्सप्रेस बार नहीं है जुरिस्डिक्शन में, फिर यह देखना पड़ेगा कि क्या ट्रिब्यूनल के अंदर प्रोसीजर पर्याप्त है। इज द प्रोसीजर गिवन इन द ट्रिब्यूनल इज सफिशिएंट? इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन आई हैव टू डिपेंड ऑन सिविल कोर्ट। सो एक तो हो गया जहां एक्सप्रेसली लिख दिया कि सिविल कोर्ट नहीं आएगा तो वहां नहीं आएगा। बी, जहां नहीं लिखा वहां यह देखना कि वहां उनके पास कोई प्रोसीजर है कि नहीं है गुड इनफ, नहीं है फाइन, सिविल कोर्ट में आ सकता हूं। सो दिस इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये केस टू केस डिटरमिन करेगा, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। एंड थर्डली, अगर कोई प्रोविजन हमने चैलेंज किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली, ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऐसे केसेस में जब तक वो डिसीजन नहीं आ रहा है तब तक सिविल सूट कैन बी अलाउड। ऑल्सो we have Rajasthan State Road Transport Corporation. Rajasthan State Road Transport Corporation versus Krishan Kant 1995। इसमें क्या हुआ था, एम्प्लॉइज ने एक सूट डाला, ये राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इनको निकाल दिया था, और उन्होंने एक सूट फॉर डिक्लेरेशन डाल दिया कि सर जो हमारा ऑर्डर, हमें टर्मिनेटिंग का ऑर्डर है, ये गलत है एंड दे शुड बी रिटेन्ड इन द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन ने नेचुरली डिफेंडेंट था, उसने रेजिस्ट किया और उसने कहा कि सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मैटर को देखने का, क्योंकि ये मैटर जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इसको सक्षम है। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट डिसीजन कि हां, यह मामला सिविल कोर्ट का नहीं है, क्योंकि यह मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का है। जो ये झगड़ा है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा में आता है, सो इट शुड नॉट बी ब्रॉट इन हियर। इट वाज हेल्ड दैट इट वाज वेल विद इन इट्स rights, the industrial tribunal had the right to try it. But सब चीजें छोड़ दो, मेरा राइट है एज ए ट्रिब्यूनल, बट मैं अपने लॉ की अनदेखी कर रहा हूं, या मैं कोई भी जो है बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहा हूं। ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट के रास्ते खुले हैं। प्रिवी काउंसिल से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये हमने सारे जजमेंट्स पढ़े। I hope everybody is clear about this aspect of tribunals and of civil courts. ये थोड़ा एक टेक्निकल मैटर था, आई नो, इसीलिए इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं जस्ट टू सम अप, एज फार एज एक्सप्रेस बार्स आर कंसर्न्ड, एक्सप्रेस बार्स वो होते हैं जो कोई स्टैट्यूट एक्सप्रेस बार करता है। They can be in acts like Election Acts, People Representation of People's Act, Income Tax Act वगैरह वगैरह जो हमने पहले बात की थी, और थ्रू ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स में दो तरह के हैं,
Tribunals can be either, now these tribunals must be statutory. ये point important है. So in statutory tribunals, if special powers have been given and expressly civil court jurisdiction has been barred, then it is barred. If there is no express mention of a bar to a civil court, then it has to be seen whether the procedure given in a tribunal is sufficient. If it is not, then we can always bank upon the civil court. And last aspect, is the civil court always barred in tribunals? For this, we have very important judgments right from Privy Council to Supreme Court. In the judgments, all these judgments, one thing was made clear. The tribunal is supposed to do its duty. The tribunal is supposed to follow the law. But if it does not follow its own statute. It does not follow the basic principles of justice, equity, and good conscience. It does not follow the principles of natural justice. In such cases, the window to civil court opens. There is a way in this blocked wall. So if there is an express bar, this express bar may have a window which is dependent on the wrongs of a tribunal. If the tribunal does not do its duty, A, by not following its own law, B, by not following justice, the principles of natural justice, then the doors of civil court open. That was held, as I told you, in Secretary of State versus Mask and Company and Seth Radhakrishnan versus Municipal Committee, Ludhiana. So I hope everybody is clear on these aspects. We are not yet through. We'll take up the remainder of this section tomorrow. Thank you. God bless.